So hi guys, my name is Saibal Gupta aka TBB India. So today I have driven a beautiful car and definitely it is a battery car, of course. Okay, so I'm gonna discuss, obviously you can understand that what car I have driven by the thumbnail and as well as the video title as well. But I can say that it is a beautiful looking car I have ever driven so far. Beauty is a subjective matter, may you like it, may you not. I'm gonna tell you in this video that whether you should consider this car in 2024 or not. I'm gonna tell you that how different this car will be the conventional German cars like Audi, BMW and Mercedes, and cars from the JLR group, and that is Jaguar, Land Rover and Range Rover. So obviously you can understand while I was comparing this car with this premium luxury brand's car, so definitely the price figure is quite a similar. I'm gonna tell you everything while driving the car. So first enjoy the cinematic shot of the beautiful car and then I will definitely meet with you inside the car and I'm gonna describe everything shortly. Hold on. Please subscribe my channel, that is TBB India, and hit the bell icon so that you will get the earliest notification, because there are so many exciting vlogs will come up later on. So that's all. Please enjoy the cinematic shot. So as I have discussed, this is an imported car and obviously you can feel this car once you get inside the car. So I'm going to tell you that how different this car will be than the other electric cars, or should you select this car over conventional luxury brands like BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Range Rover, Volvo, etc. etc. So start करते हैं प्राइस के साथ. So this car is having two variants, that is Kia EV6 GTline, which is costing around 61 lakh, and another one is GTline AWD or all-wheel drive, and which is costing around 5 lakh extra, and this is costing around 66 lakh. So all price are actually ex-showroom, but today the version I'm driving right now, that is the GTline AWD. So अगर प्राइस की बात करते हैं तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेड कार, सो ऑब्वियसली इस पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है. सो एक्चुअली EV6 इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड टैक्स लगाने बाद भी ये गाड़ी लेना जस्टिफाइड है कि नहीं, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन दिस वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की पावर फिगर की. सो एज दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक कार, हैंस दिस कार इज़ हैविंग 77.4 kilowatt of battery pack, which is producing 320.55 bhp of maximum power and 605 newton meter of maximum torque. So this car is having insane power. Just पंजा दबाया और गाड़ी पूरा भाग रही थी. And this car can goes up to 192 km/h top speed, which I haven't driven because obviously I am driving it in a city road. So this car can achieve up to 0 to 100 km/h in 5.2 second actually. So ये गाड़ी, इससे पता चलता है कि ये गाड़ी में इंस्टेंट पिकअप कितना मिलता है और कितना ब्रूटल है. So hence this is a fastest car or fastest electric car rather, I can say, in India until Lotus Electra R is coming up into the picture. Now गाड़ी का अगर अंदर बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक बहुत अच्छा सा एक फील मिलता है. एंड अगर मैं सीट की बात करूँगा तो आपको ड्राइविंग सीट पे और को पैसेंजर सीट पे आपको मिलता है अच्छा खासा
एक्चुअली एक स्पेस एंड ऑल्सो आपको मिलता है एक अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। बट रियर सीट पे मुझे लगता है अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि इसके नीचे एक बैटरी पैक है एंड पैर थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ रहा था मुझे, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बट अगर गाड़ी बहुत चौड़ी है तो आप आराम से 3 लोग बैठ के जा सकते हो। Now coming to the braking, because which is hand-on-hand required while I was discussing about the power. So this is an electric vehicle, hence region braking facility will be there in this car, or you can expect it, of course. So this car is having total 4 level of region mode, so 0, 1, 2, 3, and it is operated by a paddle shifter. So do not use paddle shifter to change the gear, so do not get confused, okay? So ये पैडल शिफ्टर एक्चुअली में आपको गाड़ी का स्टीयरिंग में मिलेगा, जो जैसे आप पिक्चर में अभी देख रहे हो या वीडियो में देख रहे हो। So brake bite is soft according to me, so as soon as you increase the region mode, brake bite started increasing. With this region mode you can do one paddle drive, like if you release the accelerator, automatically car gets slow down and it will be dead stop, so not even crawling. So obviously you need to be very calculative for that, okay? So I would recommend you to not to use that region 3, because especially if you are driving it in a highway, okay? So now this car is having total 3 modes or driving modes, okay? So eco, normal and sport. So obviously name is self-explanatory, but yes, you cannot change the mode in gear console, as Kia is giving a dedicated button for that in a steering wheel. So however, I was driving this car in sports and normal mode, and the brake and the steering feedback was very stiff according to me, and as it is requiring better handling and better stopping power as well in eco mode. But brake bite is little bit softer in eco mode. Also you will get a decent amount of speed where you can cruise all day inside the city. Even power output is also good in a normal mode, and as this car is having the high torque, so it is helping the car to get an instant pickup even if you are driving this car in a city. So pickup brakes की बात तो कर लिए हैं, पर how is the driving ergonomics, which is actually important part. So start करते हैं पहला बात की steering feedback की. Then as I have said, the steering operates in 2 ways. So in slow speed, the car's steering is much more lighter, so that you can maneuver the car easily inside the city. So अगर city cruise की बात करेंगे तो this car is the best car according to me. But sports पे थोड़ा सा high speed के कारण गाड़ी का steering थोड़ा सा भारी हो जाता है, so that it will give you the great stability and giving a sporty feel as well. So due to all-wheel drive and rear-wheel drive, we will not get any kind of undulations into the steering wheel, and that's a good part actually. So you can hold the steering lightly, so that's good. So now we will discuss about the suspension. So suspension मुझे थोड़ा सा stiffer लगा, which makes sense as this car is having insane pickup. But body roll इस गाड़ी पे मुझे ना के बराबर लगा, as there is a huge battery pack in the floorboard. So बैटरी का जो ग्रेविटेशनल वेट है, जो सस्पेंशन का जो मूवमेंट है, वो आपको गाड़ी के अंदर फील नहीं होने दे रहा है. So there is a physics law, I think, okay, so which maybe I am not able to explain you over here, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, so that's the reason I am not going to do it. अगर गाड़ी का बाहर से आप देखोगे इस गाड़ी को चलते हुए, तो आपको ज़रूर दिखेगा कि गाड़ी का जो सस्पेंशन का मूवमेंट ये आपको ज़रूर दिखेगा. So tires are playing an important role in riding ergonomics. So you will get 235 55 R19 inch of tire, which is a low profile tire like sedan cars do have. So though Kia is saying that this is a SUV, but I am little bit confused.
So size wise and the ground clearance wise, yes, this is a SUV, but but ergonomically it is a sedan, but from back it is hatchback. So it's a mixture of all cars. So if you are from 90s kid, then you might correlate with the word that is station wagon. Maybe I'm wrong, but this car is a perfect example of it. In modern days we can call it as a crossover design. Now coming back to the tires, so actually they are giving a great stability while taking the U-turn, or suppose if I'll drive the car in a zigzag way. So the low profile tires is actually mainly known for that, okay. Or as I have said, this there is a huge battery pack in the floorboard, तो आपको actually कोई pothole या कोई उबड़ खबर रास्ता आपको feel नहीं होगा गाड़ी के अंदर. So चार्जिंग की बात करें तो, और डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो चार्जिंग में बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ है जो आई विल डिस्कस इट लेटर. सो इस गाड़ी का सेफ्टी की बात करते हैं तो दिस कार इज़ हैविंग ADAS level 2 which is giving forward collision warning, then automatic emergency braking, lane departure warning, lane keeping assist, adaptive cruise control of rear view camera. So rear view camera के साथ साथ आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा सिस्टम. सो इस गाड़ी में आपको मिलता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एज वेल. मतलब इस गाड़ी में भर भर के जो फीचर एक मॉडर्न गाड़ी में मिलता है वो सारे फीचर इस गाड़ी में आपको दिख जाएंगे. एंड आपको बस रियर ग्लास पे कोई वाइपर नहीं मिलेगा like the sedan cars nowadays is having, but इसका जो रियर स्पॉइलर है, इससे हवा जो है वो ग्लास पे आती है और पानी ये निकाल के फेंक देती है. सो ये एक नया सा चीज़ इनोवेट हुआ है nowadays, so which actually sedan cars are following. So इतनी बड़ी गाड़ी को चलाना is very easy task nowadays, where the Indian roads are full of crowd and specifically in a city like Bangalore, Delhi, Kolkata. So dimension wise अगर बात करेंगे, so इस गाड़ी का लेंथ विद लगभग टोयोटा फॉर्च्यूनर से थोड़ा सा कम है. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द टोयोटा फॉर्च्यूनर एज अ रेफरेंस, ओके. नाउ बात करते हैं डिज़ाइन की. तो आई केप्ट ऑन टेलिंग यू दैट ये गाड़ी हर तरह से और हर तरीक़ों से बहुत फ्यूचरिस्टिक है. सो दिस कार इज़ sharing the same platform to build, that is EGMP, Electric Global Modular Platform, with Hyundai Ioniq 5. अगर इंटीरियर का बात करेंगे तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत सिंपल एंड फ्यूचरिस्टिक लगा. So this car is having two massive display. One is for speedo and battery indicator, and another one is for infotainment display with Android Auto and Apple CarPlay, and both of them are wireless, okay. So trust me, might you not feel in this video, but they are massive. And pair of two 12.3 inches of touch screens which are curved and angled towards the driver. But good part is Kia has retained the physical knobs for AC and media volumes, but yes, you need to toggle in between two with a single button. So not only that, this car has total 64 color ambient lighting, but you will get a beautiful textured dashboard design inside the car, and especially it is in a co-driver side. Even this car it has heads-up display, but there is no dedicated display for that which is popping out. It is just a reflection what you can see in a windshield. और अगर बात करें म्यूज़िक एक्सपीरियंस की, सो दिस कार इज़ हैविंग मेरिडियन, एंड मेरिडियन का आउटपुट बहुत अच्छा होता है. सो हैंडरेस्ट पे जो गियर कंसोल या स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है वो मुझे थोड़ा सा इनोवेटिव लगा,
और आपको साथ ही साथ इस पे आपको मिल जाएगा वायरलेस मोबाइल चार्जर एज वेल। ऑब्वियसली इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, तो अगर मैं चार्जिंग की बात करूंगा तो इस गाड़ी में आपको भर भर के टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे। यू डोंट इवन हैव सो मेनी डिवाइसेस एज वेल टू चार्ज, बट स्टिल दिस कार इज गिविंग यू और ऑफरिंग यू एक्चुअली। सो ये मुझे थोड़ा सा इनोवेटिव लगा। अगर सीट की बात करेंगे तो इस सीट पे आपको वीगन लेदर यूज़ किया जाता है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगा मुझे। बट इसका ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट का जो हेडरेस्ट बड़ा अजीब लगा मुझे दिखने में। एंड अगर मैं बात करूंगा मेमोरी सीट, ऑब्वियसली हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शन इन द सीट्स, ये आपको ऑब्वियसली इस गाड़ी पे मिलेगा। बाकी इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर का जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक है, तो ये आपको रूमी फील नहीं करवाएगा इफ़ आई कंपेयर विद द इयोनिक 5। बट अगर प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूंगा तो इस गाड़ी में आपको बहुत बड़ा सा स्पेस मिलेगा एंड यू विल गेट, एज आई हैव सेड, प्लेंटी इनफ ऑफ टाइप सी पोर्ट्स टू चार्ज योर डिवाइसेस। नाउ अगर बात करते हैं इंटीरियर की तो ऑब्वियसली आई नीड टू टेल यू द स्पेस। सो यू विल गेट अराउंड 540 liter of boot space, which is humongous. Okay, so now अगर बात करते हैं डिज़ाइन की, so it's an excellent looking car. So tiger nose like एक फ्रंट ग्रिल आपको मिलता है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी का जो मेन यूएसपी मुझे लगा ये है इसका रियर लाइट का डिज़ाइन, जो मुझे बहुत ही इनोवेटिव लगा और बहुत हटके लगा। एंड दिस गाड़ी का अगर रोड प्रेजेंस की बात करेंगे ये गजब है। If I'm not mistaken, that means so many actually लोग जो है वो इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देख रहे थे। So obviously if you are buying a car to show off, I don't want to use that word, but yes, actually it is worth it. Okay, so maybe it is not justifying, but this car is one of the best looking car according to me. एंड स्पेशली इसका अगर जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की बात करेंगे तो इफ़ आई कंपेयर विद द इयोनिक 5 तो मुझे इयोनिक 5 से ज़्यादा मुझे ये कार का जो अपीयरेंस है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इस गाड़ी पे आपको सनरूफ भी मिलेगा, हालांकि आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसका जो सनरूफ है मुझे थोड़ा सा छोटा लगा। कि आई कैन ईजिली गिव द पैनोरामिक सनरूफ वेयर इट इज़ ऑलरेडी गिविंग टू इट्स यंगर सिस्टर किया सेल्टॉस। So now charging की बात करते हैं, which is the last point. So this car can be charged 10% to 80% in just 18 minutes using 350 kilowatt of DC charger, which is not even available right now in my knowledge in India. So in India, we are getting up to 55 kilowatt of charger, which is charging this car from 10 to 80% around 70 to 80 minutes maximum. And in home charger it will take around 12 to 17 hours to charge the vehicle easily actually. Now coming to the final question every Indian asks, कितना देती है? Since this is an electric car, so this car can goes up to like 708 kilometer in eco mode as per the company or ARAI. But in real world you can easily expect 528 to 550 kilometer in single charge, which is very good actually. और obviously आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो तो ये डिपेंड करता है आपका चलाने के ऊपर कि आप कैसे इस गाड़ी को चलाते हो। अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो ऑब्वियसली इसका जो रेंज है थोड़ा सा घट जाएगी, और अगर आप गाड़ी को चलाओते हो एक नॉर्मल सा तरीके से तो ऑब्वियसली 550 और 600 किलोमीटर तक तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। So that's all about this video guys. So अभी मिलते हैं घर पे and obviously I'm gonna tell you that what are the things which I actually don't like it about this car. So already मैंने बोल दिया है sunroof के बारे में, and rest of the thing I'll gonna discuss everything in detail while I will be going back to home. And also I'm gonna discuss that is it okay to pay around 65 or 68 lakh for this car. So hello guys, as you can see that I'm back at home and I have already discussed most of the things while I was driving the car, but now I'm gonna tell you few things which I don't like. Okay, and I have already discussed few of them as well while I was driving. The first thing which I don't like about this car, and that is the sunroof. Yes, this car is having sunroof, but it is very small, whereas if I'll talk about its competition,
like Volvo V40 Recharge. Okay, so that particular car is having the proper complete sunroof, but whereas in this car it is not there. So this is the one thing which I don't like. Yes, I know you might say that Indian weather is not good for sunroof. Still, if you are spending this much amount of money, then definitely you can expect the proper panoramic sunroof just like the other cars. So this is the one thing which I don't like about this. Maybe in 2024 or 2025 the Kia will come up with a panoramic sunroof with this car, but however, as of now there is no report as such from the company that they will gonna provide the proper panoramic sun. So second thing which I don't like about this car, and that is already I have discussed, that is the under thigh support for the rear passenger. Yes, अगर आपका हाइट 6 फीट से थोड़ा ज्यादा होगा तो आपको अंडर थाई सपोर्ट पीछे वाले सीट पे नहीं मिलने वाला है. सो क्यों नहीं मिलने वाला है? इसका कारण इस गाड़ी का नीचे फ्लोर बोर्ड पे है एक लंबी सी और बड़ी सी लिथियम बैटरी. सो बैटरी पैक नीचे है, इसीलिए क्या होता है कि आपका अंडर थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलने. बट अच्छी बात यह है कि आपको एक प्लेंटी इनफ ऑफ लेग स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हो. तो ये एक अच्छी बात है. एंड बुरी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलने वाला. नाउ अनदर थिंग व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार, एंड दैट इज द विजिबिलिटी. यस, विजिबिलिटी उतना खास लगा नहीं. क्यों नहीं लगा? आई विल टेल यू. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द विजिबिलिटी के लिए जो चीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उसका है IRVM एंड ORVM. इसका जो विजिबिलिटी है IRVM एंड ORVM के थ्रू वो उतना ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा. ORVM फिर भी मुझे ठीक ठाक लगा, डिसेंट लगा. बट अगर IRVM की बात करूंगा तो वो बहुत साइज में छोटा है, एंड पीछे का जो ग्लास है वो भी बहुत साइज में छोटा है, तो इसलिए मुझे अच्छे से विजिबिलिटी नहीं मिल रहा था. बट यस, अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको मिलता है 360 कैमरा. So yes, you need to rely on the technology. Now another thing which I don't like about this car, and this is the vital thing which I don't like, and that is the brake bite. Yes, so initially while I was driving the car, and I was driving in a normal mode, okay, and the region mode was 1. I was trying to apply the brake and the brake bite was so soft. Okay, so I was little bit scared to give the acceleration. So later on क्या हुआ कि मैंने उसका जो region mode बढ़ाया. First I was trying to give 2. So 2 में उसका brake bite मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, at least better 1. एंड जब उसको मैं रीजन 3 में डाला तो उसका ब्रेक बाइट और भी अच्छा लगा. आप जब एक गाड़ी को चलाओगे एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट तब आपको आराम से पता चल जाएगा कि गाड़ी में किस तरह से कैसे कब तक उसको ब्रेक को अप्लाई करना है. बट येस, आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ Kia, if you are listening, then I would suggest you to improve the brake bite at least from the region 1 and at least in a normal mode. Okay, so this is a small thing which I faced difficulty. इसका मैं अगर design element की बात करूँ तो this car is way better than any other car in this price bracket. So this is a small thing which I personally like it about this car. And obviously इस गाड़ी में आपको vehicle to vehicle charge वाला function भी मिलता है if you are having some kind of electric equipment with you, and if you are going for any picnic or something, because it's January, so you know that we are all going for picnic. So picnic में अगर कोई आपको home appliance चलाना है जैसे मिक्सी वगैरह और bonfire and all that, तो आप आराम से इस गाड़ी का जो चार्जिंग को यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली आपको एक अलग से लेना पड़ेगा DC to AC चार्जर वाला थिंग, and after that you can easily run this kind of stuffs. So that's all the thing which I like about this car. ये गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल सा गाड़ी है. नाउ अगर बात करेंगे प्राइस फिगर की, तो 65 to 66 लाख में अगर मैं बोलूंगा तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी वाला कार है. So that's all about it. Please subscribe my channel, that is TBV India, and there, as I have said in the beginning of the video, that there are so many exciting blogs will be coming up this channel. So please subscribe my channel, that is TBV India. So as I have said earlier also, that I have introduced a new segment, that ownership review. So if you are from Kolkata, Asansol, Dhanbad, Durgapur, Ondal or anywhere, so obviously please feel free to contact with me in my Instagram page, and I will definitely contact with you, and I will drive your car and share your experience with the viewers. So that's all about it, guys. So I have to take a sweet alvida, so please wear helmet while you are riding a motorcycle, and please tie up the seat belt while you are driving the car. I have to take a sweet alvida from you. So till then, take care, bye bye, have lots, and please drive safe and ride safe.